Okay. Firstly, good morning all of you. Good morning. You are looking so tired. Why? Yeah. Huh? Lot of workout. Good. You are looking fresh today. So yesterday we was talking about water cycle. I think there are three things in which, let's start. There are three things. सर अभी कुछ प्रोसीजर चल रहा है, आफ्टर वाटर साइकिल आप एक रिदम में आ जाएंगे, ठीक है? तो अभी के लिए सिर्फ, बट फिर भी आई विल ट्राई कि आपको क्लियर हो जाए. सर यू नो वेरी वेल ice, when we increase temperature, then ice convert into water and water convert into, when we increase temperature, then water convert into vapors. Yes or no? Everyone know about? But when we decrease the temperature, then water vapor become convert into water, and again we decrease temperature, then water convert into ice. This is a simple process which depend on temperature. When ice convert into water, known as evaporation या evaporization. Yes or no? When water convert into vapor, known as this process is known as liquefaction, and this is known as vaporization, evaporation. Yes or no? Ice convert into water, that is known as liquefaction, and water convert into vapor, known as evaporation. Yes or no? After that, when vapor convert into water, that is known as condensation. Condensation is a process in which vapor convert into water. That is the simple process. We can say that the formation of cloud, we can say that formation of rain. This is the simple example. When water convert into ice, that is solidification. That is known as solidification. This is a simple process. But when ice convert into vapor,
directly. Ice, dry ice, just a simple example. When ice convert into vapor, known as sublimation. How it happen? It is a process in which naphthalene ball या dry ice can directly convert into vapor. It is a process. When vapor convert into ice, that is known as deposition. That is known as deposition. These are the process. और ये एग्जाम्पल हम लोगों ने वाटर के थ्रू ही इसको डिस्कस किया है. These are the process. If you want note down, you can fast. Ice convert into water, that is known as liquefaction, and water convert into vapor, known as evaporation. Evaporation. Now, let's see through a figure. Let's see through a figure. Done? Everyone? Done, sir? Good. This is the water cycle. This is the water cycle. You can see. We see every type of procedure जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो अभी टॉक अबाउट. सर प्लांट, this is the surface water. Sir, this is the groundwater, this is the surface water. Okay. After that, we will discuss, you know very well, we will discuss about the water cycle. Cycle means this. This is the cycle. This is the cycle in which we can say that a cyclic process, yeah, we can say that a reversible process. Yes or no? That is the cycle. So look at here, some kind of water evaporation. Yeah, we know very well, this is evaporation. Evaporation by heating. ठीक है. और जैसे ही हीट हुआ, इवेपोरेशन हुआ. इवेपोरेशन मीन्स वेपर पार्टिकल्स फॉर्मेशन.
और वेपर पार्टिकल्स फॉर्म हुए, देन कंडेंसेशन, वेपर पार्टिकल कन्वर्ट इनटू क्लाउड। एक तो फर्स्ट प्रोसेस ही हो गया क्लाउड फॉर्मेशन का। सेकंड प्रोसेस क्लाउड फॉर्मेशन का, जो you know plant have these type of leaves, and leaves have some pores yes or no, known as stomata. What are the function of stomata? Exchange of gases. Very good. Exchange of gases, as well as one more, transportation of water. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आप किसी भी प्लांट के नजदीक जाएंगे ना, आपको एक, अगर जितना डार्क प्लांट होगा, जितना ज्यादा डार्क होगा, उतना आपको फील होगा टेम्परेचर कम। आप लोग देखिएगा कभी, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन भी कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है वाटर का, वाटर को रिलीज कर रहा है थ्रू स्टोमेटा, और वाटर रिलीज हो रहा है थ्रू स्टोमेटा, देन they form cloud also. So we can say that this is the formation of cloud. First formation condensation, second formation transpiration या transportation, थर्ड फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा, ड्राई आइस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर, dry ice directly convert into vapor. This is the process of, again we can say that this is the process of formation of cloud. So there are three process. First one is condensation, second one is transpiration, and third one is sublimation. After the formation of cloud क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, देन टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो सम प्लेसेस क्या होगा, आइस की फॉर्मेशन होगी इन हाई एल्टीट्यूड, और सम प्लेसेस जो वाटर वेपर यानी रेन, यू कैन से दैट। तो यहां से कंडेंसेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ, सब्लिमेशन हुआ, आफ्टर डिक्रीज टेम्परेचर, देन क्लाउड, yeah, we can say that water vapor convert into ice, water vapor convert into water. This is the process of water cycle, we can say that this is the. If you have any type of doubt, you can ask. This is the water cycle जो yesterday we was discussing, yeah, we was talking about. Done, sir? Done? Okay. Next one. Now write down. Now carbon cycle. Now carbon cycle. Write down. We know very well every
living organism have carbon. Every living organism have carbon. So we can say that the carbon is the second most abundant element on earth crust. First oxygen, earth surface, first oxygen, second carbon. And देखो आप लोगों ने सुना है, आप लोग जानते भी हैं, आप लोगों में से साइंस बैकग्राउंड कितने स्टूडेंट्स करा है? साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, चलिए चलिए आप लोग नहीं, यू नो, यू लिसन एटॉमिक मास. Presently the atomic mass, that is number of proton plus number of neutron. Yeah, we can say that the total mass of nucleus is called atomic mass, है ना. बट ये एटॉमिक मास जो एक टर्म क्रिएट करता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, और वो रिलेटिव एटॉमिक मास कार्बन को लेकर ही मेजर किया जाता है. सम काइंड ऑफ पार्टिकल्स या सम काइंड ऑफ मैटर हैव एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, but every living organism have carbon. Answer. That's why carbon, we can say that the most abundance or most important element for human beings, yeah, for living organism. So again, most important cycle, we were sorry, now we will discuss about carbon cycle. Write down carbon cycle. It's very simple for us. Write down the carbon cycle is the biochemical cycle, biogeochemical cycle. The carbon cycle is biogeochemical cycle in which carbon is exchanged by, या exchanged between soil, water and atmosphere of the earth. It is the most, second point, it is the most important cycle. It is the most important cycle of the earth and allow for the carbon to be allows for the carbon to be recycled by all of the organism. Recycled by all of the organism. ठीक है सर, मीन्स जितना भी फॉर्मेशन है वो एक रिसाइकल फॉर्मेशन के अंदर कार्बन हमें देखने को मिलता है. और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है सर, दिस इज द ट्री
and with the help of sunlight carbon डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उसको गेन कर रहा है कौन? प्लांट, ठीक है, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गेन by human. We can say that this is the respiration process. In the respiration process, glucose react with oxygen and release carbon dioxide. Glucose react with oxygen, then they form carbon dioxide, water plus energy, which form in ATP form. In ATP form, yes or no? And human release carbon dioxide in this process. You can say that. You can see that this is the process, aerobic process, occur in human body, occur in mitochondria. हाँ, और यहां से क्या रिलीज हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल by tree या plant, yes or no? And carbon dioxide and water with the presence of sunlight and the presence of chlorophyll found in plant react with C6H12O6 plus O2, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है. अब यहां एक बात, क्या ह्यूमन इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है कि जितने भी प्लांट है उनको फूड मिल जाए? नहीं. तो इसके लिए सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम वुडन को जो है यूज करते हैं, तो वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो प्लांट को फूड मिल रहा है वहां से. ठीक है. एक बात और, कार्बन डाइऑक्साइड एक चीज और हेल्प करता है. यू नो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम, वाटर लाइम या स्लेक्ड लाइम, these are the formula, these are the formulas of calcium hydroxide. These are the name of calcium hydroxide. When calcium hydroxide react with carbon dioxide, they form calcium carbonate और वाटर रिलीज हो गया. अब ये बता दूं रिएक्शन आपकी लाइफ में कहां है? ड्यूरिंग व्हाइट वॉश, ड्यूरिंग पेंट. आप देखिए, इमीडिएट जैसे ही हम व्हाइट वॉश करते हैं, क्या इमीडिएट शाइन होना स्टार्ट हो जाता है? आफ्टर 2 or 3 days. मतलब वहां रिएक्शन हुई है. जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो व्हाइट वॉश हम लोगों ने यूज किया है, व्हाइट वॉश यूज किया है, ठीक है, रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना प्रोडक्ट बेटर होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और जितना कैल्शियम कार्बोनेट अच्छा हुआ आपका शाइन उतना ही अच्छा होगा. समझे? दैट्स व्हाई आउटर शाइन इतना अच्छा होता है एज कंपेयर टू इनर शाइन.
आप देख लीजिए, किसी भी घर में जो इनर शाइनिंग होगी वो कम होगी, आउटर शाइनिंग बेटर होगी, और सिटीज के अंदर आउटर शाइनिंग अच्छी होती है एज कंपेयर टू विलेज। ये भी एक रीजन है। सो वी कैन से दैट दिस इज द प्रोसेस in which we can say this is carbon cycle. Understand? Now, next, write down. If the concentration of, चलिए एक चीज और देखिए, एक एग्जांपल और देखिए सर। अब सपोज इट, this is our earth, an amount of carbon dioxide, this is our atmosphere, और amount of carbon dioxide increase हो गया, suppose it, then what will be happen? Temperature of earth increases, then we can say that carbon dioxide also the reason of global warming. Global warming, yes or no? अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया देन टेम्परेचर डिक्रीजेस, यस और नो? और टेम्परेचर डिक्रीज हो गया यानी कार्बन concentration of carbon dioxide when decreases, then when concentration of carbon dioxide increases, it is the reason of global warming, yes or no? When concentration of carbon dioxide decreases, then reason of global cooling. Then it is the global cooling phenomenon, है ना? अब सर टेंशन में आ गए, सर वो कैसे होगा? आ गए ना टेंशन में? अच्छा नहीं, पूछ सकते हो, मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे, है ना? बट मेरा काम आपको एक्सप्लेनेशन देना है, और चाहे वो एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, 5 एग्जांपल, जितना भी। अब सपोज इट, देखिए सर, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। जो प्रेजेंट ग्लोबल कूलिंग है, सॉरी प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग है, वो फ्यूचर ग्लोबल कूलिंग होगा। जो प्रेजेंट में ग्लोबल वार्मिंग है वो फ्यूचर में ग्लोबल कूलिंग होगा। हाउ? देन तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग कहां से आ गया? थिंक अबाउट इट। यस सर, नो आइडिया, वेरी गुड, गेट आइडिया। ओके, देन कार्बन कम हो गया तो वी कैन से दैट कि प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप ही कह रहे हो, which are depend on each other. सर वेरी गुड सर। देखो मैंने कहा, मैंने कोई कार्बन का रूल पार्ट यूज नहीं किया अभी, मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट कहा कि प्रेजेंट का ग्लोबल वार्मिंग फ्यूचर का ग्लोबल कूलिंग होगा। कार्बन की तो बात ही नहीं की मैंने। अच्छा, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, नहीं 15 डिग्री सेल्सियस।
प्रेजेंट। ठीक है, अब व्हाट आर द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। व्हाट आर द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? एक सिंपल पार्ट, व्हेन increases pollutant gases, ठीक है, pollutant gases। अब सपोज इट, जैसे जैसे pollutant gases इंक्रीज होंगी, वो एक या ओके चलिए एक छोटा सा एग्जांपल इसमें और कनेक्ट कर देता हूं मैं। अब सपोज इट सर, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, या चलिए इसको भी हटाइए, एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं। गर्मी का टाइम है, आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है और उसके सब मिरर क्लोज है, ठीक है, हीट डायरेक्टली एंटर तो कर गया बट उसको वापस नहीं जा रहा है। सेम कंडीशन होगी, एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसा पार्ट क्रिएट होगा, अब हीट इसके अंदर डायरेक्ट एंटर तो करेगा बट वापस नहीं जाएगा। दिस इज द ग्लोबल वार्मिंग। अब ये पोल्यूशन के थ्रू ये जो लेयर है ये इतना हावी हो गया कि इसके अंदर हीट एंटर ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा भी तो टाइम आएगा, थिंक अबाउट इट, नो इशू। आप जिस लेवल का आज पोल्यूशन कर रहे हैं, एक ऐसा भी तो टाइम आएगा ना, आज जो सनलाइट है वो एंटर कर गया, आज ये लेयर इतना है कि इसके अंदर एंटर तो कर गया, अब एंटर कर गया तो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो गया। एग्जांपल ऑफ आवर कार, यस और नो। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, अब जैसे जैसे हम लोग पोल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी हैपन, देन ये जो सनलाइट है ये एंटर ही नहीं करेगी, और अगर सनलाइट एंटर नहीं करेगी तो हीट कहां से मिलेगी? यस सर। हाँ चलिए एक और एग्जांपल देता हूं। दिवाली में क्या होता है, फिर कहां चला जाता है सन? दिवाली से 4 से 5 दिन बाद सन कहां चला जाता है? थिंक अबाउट इट, क्यों? सन तो दिखाई नहीं देता। एक पोल्यूटेंट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए सर। पोल्यूटेंट पार्टिकल्स, जब देखो अभी क्या है, अभी पोल्यूटेंट पार्टिकल्स कम है, आपको सनलाइट फील हो रही है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स, आफ्टर सम डिकेज, ये पोल्यूटेंट पार्टिकल्स दे आर क्लोजली बाउंडेड ईच अदर, और ये जिस दिन बाइंडिंग हो गया ना, आपकी सनलाइट आपके अर्थ तक आएगी नहीं, और सनलाइट अगर अर्थ तक नहीं आई तो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रेजेंट की है, क्योंकि आप लोग बहुत तेजी से पॉल्यूशन कर रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, आपको अभी तो मैंने बहुत कुछ है आप लोगों के साथ डिस्कस करना सर। दैट्स वाई तो ये कॉप्स चल रही है सर, दैट्स वाई तो यूएनईपी काम कर रहा है, दैट्स वाई तो आईयूसीएन क्रिएट किया है 1948 के अंदर, दैट्स वाई तो यूएनएफसीसीसी आया है सर। बहुत टेंशन है ये, दिस इज द मेजर टेंशन ऑफ दिस अर्थ। ओके भाई, आज जिस तेजी से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है, देखिए ना क्लाइमेट चेंज कितना हो गया। यूके में समर आ गया, यूके में समर आ गया, बिल्कुल। और अब देखिए ना, अब बारिश चल रही है, ये टाइम बारिश का कब से हो गया? यहां तो हम वेट करते थे कि गर्मी की छुट्टियां कब होंगी। आप चेक करें अपने बचपन को, मई के अंदर, मई स्टार्टिंग में तो हमें ये लगता था बस और ज्यादा गर्मी, बहुत गर्मी होने लगी। आज आप देखिए, ठीक है सर, दिस इज द क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है,
टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जितना बढ़ गया, जितना पोल्यूटेंट पार्टिकल्स इंक्रीज हो गया, सनलाइट को एंटर नहीं करने देगा आफ्टर दैट। और अगर सनलाइट एंटर नहीं हुआ, देन present global warming, we can say that this is the future global cooling. Then, yes, any doubt, any question? Yeah, you can ask. Then, very good. कहते हैं ना कि आइस एरा, हिमयुग, वो आएगा वापस, वो आएगा, बट उसमें टाइम कितना लगेगा वो डिपेंड ऑन। दैट्स वाई तो एसडीजी चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। दैट्स वाई तो कार्बन सिंक, दैट्स वाई तो कार्बन इमिशन, इंडिया भी टारगेट रख के बैठा 2070 तक कार्बन इमिशन 0 कर देंगे हम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सबको दिख रहा है कि ऐसा होगा। आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग के टाइम में नहीं होगा ये, बट ये क्योंकि साइंस, एनवायरमेंट, ये फ्यूचर प्रोग्रामिंग होते हैं। आप आज प्लान कर रहे हैं, तब जाकर के कई साल बाद ये चीजें कंप्लीट होती हैं। ठीक है सर? तो प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग वो फ्यूचर का ग्लोबल कूलिंग होगा, ये कंफर्म। डन? चलिए नेक्स्ट वन। नाउ वी कैन से दैट, राइट डाउन, if the concentration of carbon dioxide increases, if the रंजन कुमार जी नमस्कार, आइए, वेलकम है आपका। if the concentration of carbon dioxide increases, it leads to the global warming phenomenon. If the concentration of, next point, if the concentration of carbon dioxide decreases, the concentration of carbon dioxide decreases, it leads to global cooling phenomena. Sir, in UPSC there is no shortcut. ठीक है? हाँ, आपको हर पॉइंट यहां रिटर्न करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, इसीलिए तो यूपीएससी है। और ना कभी हमें ये फील करना है, अगर एक पॉइंट को हम बार बार रिटर्न कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा। इसीलिए तो जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो एक बुक को 10 बार, 12 बार, 15 बार, न जाने कितनी बार पढ़ लेते हैं। वैसा नहीं है कि यहाँ यार ये तो पढ़ा हुआ है चलिए आगे, नहीं। ठीक है? तो देयर इज अ नो शॉर्टकट। गुड, नेक्स्ट वन। कार्बन इज इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वी नो वेरी वेल, कार्बन इज इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल of protein, DNA, RNA, lipids, carbohydrates, etc. Carbohydrates,
lipids. Lipids is fat. We know about carb, we know about protein, we know about lipids. ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बताया, when the concentration increases of carbon dioxide, then we can say that there was high temperature. Yes or no? Write down next point. Write down next point. At the time of formation of Earth, there was high temperature, there was high concentration, of carbon dioxide, there was high concentration of carbon dioxide, and temperature was also high, At the same time, oxygen was absent. ठीक है सर। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कब होती है? इन विच प्रोसेस? द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will decreases. In which process? We can say that during photosynthesis. It's very simple process. Yes or no? So write down in next point. Due to the photosynthesis, the present Earth witnessed decrease in the concentration of carbon dioxide, and increase in the concentration of oxygen in the atmosphere, and temperature has attained its optimum level. Its optimum level. Its optimum level. Then sir, this is the process of carbon cycle. If you want, note down, you can. Otherwise, next one is nitrogen cycle. If you want, we can say that the carbon cycle is the process of formation of food, animals as well as plants. So this is the most important cycle for all living things. अगर ये नहीं है तो लाइफ नहीं है, we can say. वैसे लाइफ तो किसी भी साइकिल के बिना नहीं है, बट है ना, there are two type of cycles. First one is natural cycle and second one is sedimentary cycle. ये मैंने कल yesterday we was talking about. ठीक है, तो जो नेचुरल साइकिल है, these are most important. जो सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं, सेडिमेंट्री साइकिल लाइक फॉस्फोर साइकिल, सल्फर साइकिल, है
है ना। 1% उनके बिना इंसान सस्टेन कर सकता है, लेकिन इनके बिना सस्टेन नहीं करेगा। बट दीज आर इकोलॉजिकल पार्ट, और बिना इकोलॉजिकल पार्ट, बिना इकोसिस्टम पार्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सस्टेन नहीं होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल। this 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 then sir, good. Any doubt? Very good sir. Feeling good? Now let's start nitrogen cycle. Now we know about nitrogen. Nitrogen means N2, 78% nitrogen found in our atmosphere. Yes or no? 78%. Nitrogen, atomic number of nitrogen is 7. In first orbit, 2 electron, then 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Both nitrogen atom satisfied each other. ये इसको satisfy कर रहा है, ये इसको satisfy कर रहा है. In this is the first nitrogen, this is the second nitrogen. In first nitrogen, we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 electron in outermost shell. In second nitrogen, we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Both nitrogen atom satisfied with each other. Yes or no? So we can say that nitrogen gas, we can say that this nitrogen gas, क्या है ये? Now stable? Yes or no? And stable gas also known as inert gas. Stabilization gases, yeah, we can say that the stable gas known as inert gas. We know about inert gas. We can say that Hina, Nina or Karina, Hina, Nina और करीना का एक्सरे रंगीन
This is the mnemonics of inert gas. You know about mnemonics? There are many mnemonics. First, हलीना की रब से फरियाद. सेकंड, बेटा मांगे कार. हाँ, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम कहे फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब. फिर कल आएगा ऑटो, फिर कल बाहर आएगा ऑटो. कहे सीता गीता सुनो प्रभु. बैंगन आलू गाजर इन थाली या थैला. और मैनी नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास. देयर आर मेनी टाइप ऑफ mnemonics. बट जो 18th ग्रुप है, these gases हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन. ठीक है, ये क्या है? ये एक स्टेबल गैसेस है. Why they are stable? Because every gas have a stable valency. Means we can say that 8 electron in outermost shell. When an atom create या through bonding form out 8 electron in outermost shell, then we can say that this is inert gas. तो नाइट्रोजन यही तो कर रहा है. नाइट्रोजन यही कर रहा है भाई. नाइट्रोजन combine with each other and form 8 electron in outermost shell. Then we can say that nitrogen यानी N2, the formation of N2 can exist in nature in inert form. Then so write down in a simple way, 78% of nitrogen of total air found in our atmosphere, of total air found in our atmosphere, nitrogen gas has nitrogen triple bond, so nitrogen is an inert gas. So nitrogen is an inert gas. चलिए एक पॉइंट और देखिए सर. नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं. देयर इज नो. चलिए सर एक पॉइंट और देखिए. देखो हमारा जो डीएनए है और जो आरएनए है और जो प्रोटीन है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये सब, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन प्रेजेंट. सो वी कैन ओके, एक क्वेश्चन है वैसे आप लोगों के लिए. ठीक है, यू नो अबाउट DNA structure? How many genes are present in a DNA? How many genes? Sir, DNA. How many genes? पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पूछा मैंने नंबर ऑफ जीन पूछा आपसे. Okay, you know about the nitrogenous base which are found in DNA? Guanine, cytosine, adenine, thymine. We can say that these are the alphabets of DNA. और इसी सीक्वेंस से तो आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया है, HGP, in 1990. ये भी साइंस एंड टेक, जो बायोटेक पढ़ेंगे आप लोग, उसके अंदर डिस्कस करेंगे.
in one DNA we have 30,000 gene, 30,000 gene. ठीक है सर। और ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ना, these are 320 CR, 320 CR। चलिए एक और इंफॉर्मेशन दे ही देता हूं, आप चल ही रहे तो आप लोग, ठीक है, मैं साइंस टेक नहीं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बट कुछ फैक्चुअल चीजें ऐसी हैं जो अभी यूज हो गई तो बता देता हूं। You know about सुपर कंप्यूटर? अब सुपर से क्वांटम कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, फिर ऑर्गेनिक कंप्यूटर बनाए जाएंगे जिनके अंदर डीएनए स्टोर होगा। डीएनए चिप जो बनती है वो डीएनए की बनेंगी, ठीक है। 1 किलोग्राम डीएनए अगर उस चिप में होगा तो सर अब तक का जितना भी डेटा जनरेट हुआ है वो सब स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, बिकॉज डीएनए जो है वो हमारी लाइफ में, हमारे अंदर जितना भी नॉलेज है वो हमारे पेरेंट्स को शो कर रहा है, चेक कर लीजिए, और पेरेंट्स के पेरेंट्स को शो कर रहा है, और जो हमारी स्पीसीज जहां से स्टार्ट हुई उन स्पीसीज को शो कर रहा है। अब 1 किलोग्राम डीएनए और डीएनए उसको हम स्टोर कर जाएं और सपोज इट 5,000 साल, 6,000, 6,000, 7,000, 10,000 आफ्टर ये ईयर, ये जो अर्थ है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, फिर एक लाइफ जनरेट हो, लाइफ जनरेट हुई आफ्टर 1 लाख ईयर, उन्होंने चेक किया, उनको कहीं मिल गया हमारा डीएनए स्टोरेज, तो इमीडिएट वो जान गए कि हमारे जो हमसे पहले लोग थे वो कितने एडवांस थे, है ना। यू क्रिएट, यू नो अबाउट दैट। आज का जो कंप्लीट एरा है वो डिपेंड ऑन इंटरनेट। इन एवरी सेकेंड वी क्रिएट मिलियंस ऑफ डाटा, ट्रिलियंस ऑफ डाटा, क्योंकि आप भी फॉर्म कर रहे हो, अब जैसे लाइव क्लास चल रही है ये भी एक डाटा ही फॉर्म हो रहा है, आप लोग भी फॉर्म कर रहे हो, आपके फ्रेंड भी फॉर्म कर रहे हैं, और आप लोगों ने लाइव कोई शॉपिंग की आप लोगों ने, वो भी तो डाटा ही फॉर्म हुआ। उन सबको स्टोर कर सकता है इन 1 किलोग्राम डीएनए। यस सर। हाँ हाँ, नो इश्यू। अब देखो क्या होता है, नाउ वी वॉज डिस्कसिंग या वी वॉज लिविंग इन, वी आर लिविंग इन नाउ प्रेजेंट इन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट आफ्टर 2012, है ना। पहले डार्विनिज्म आया, ठीक है, फिर न्यू डार्विनिज्म आया, और प्रेजेंट के अंदर देखो सबके अलग अलग थ्योरी है। ये इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको ये मिलेगा, ठीक है भाई। सबका थ्योरी ये था, जैसे लेमार्किज्म आया था सबसे पहले। लेमार्क की थ्योरी ये थी कि जो इस अर्थ पर सस्टेन हुए, जो जिस कंडीशन में रहने लगे, जैसे जिराफ क्या करता था कि वो वहां से डेजर्ट एरिया में ज्यादा रहता था, तो वहां के जो लीफ थे वो काफी ऊपर थे, वो धीरे धीरे अपनी उनको पकड़ने के लिए गर्दन ऊपर करता था, दैट्स वाई उसकी गर्दन लंबी हो गई। ये लेमार्किज्म की थ्योरी थी। फिर डार्विनिज्म आए, डार्विनिज्म की थ्योरी आई कि जो जीन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लार्ज प्लांट और स्मॉल प्लांट, यू नो वेरी वेल अबाउट,
फिर आया नियो डार्विनिज्म। नियो डार्विनिज्म में आया जो कैरेक्टर है, हमारे पेरेंट्स से हमारे कैरेक्टर मिले, उनके पेरेंट्स को उनके कैरेक्टर मिले, और हम जो हमारी फॉर्मेशन है वो होमोसेपियंस प्रोसेस के थ्रू हुई है। बट इन 2012 ह्यूमन बींग्स या एवरी एनिमल्स कैन सस्टेन थ्रू इकोलॉजिकल सिस्टम, थ्रू एनवायरमेंट। आप जहां जहां आपको भेज दिया जाएगा, आपकी बॉडी में यू हैव अ कैरेक्टर एडेप्टेशन, और 2012 के बाद ही तो एनवायरमेंट को इन्वॉल्व किया गया है, और अब ये मोस्टली थ्योरी प्रूव हो रही है। नाउ दिस इज एनवायरमेंटल एरा, दिस इज इकोलॉजिकल एरा, और अकॉर्डिंग टू इकोलॉजिकल एरा वो जो डार्विनिज्म और डार्विनिज्म को हटाया है, न्यू डार्विनिज्म को नहीं हटाया, जेनेटिक चेंज को नहीं हटाया। अभी समझना इस बात को, जेनेटिक चेंज अभी भी है, इनहेरिटेंस ये अभी भी प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस चेंज हो गया, क्योंकि अब एक बात देखिए, उनकी थ्योरी ये थी कि स्मॉल प्लांट और लार्ज प्लांट कंबाइन विद ईच अदर, दे फॉर्म दिस, उनकी कंडीशंस थी, है ना। बट यहां नहीं है कंडीशंस, बिकॉज वी नो अबाउट देयर आर मेनी काइंड ऑफ डिजीज थ्रू जीन, वी नो अबाउट, जस्ट लाइक पटायू सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है। और डिफर काइंड ऑफ स्पीसीज अगर कंबाइन होंगी, तो उनकी थ्योरी क्या थी कि लार्ज प्लांट और स्मॉल प्लांट, अगर ह्यूमन के अलावा आप किसी और एनिमल से रिप्रोडक्शन करा सकते हैं क्या? चेक कर लीजिए, कभी सुनना है किसी फीमेल ने किसी बंदर को जन्म दिया? नहीं हो सकता, दैट इज इम्पॉसिबल। बट उनकी थ्योरी ये कहती थी, कहीं ना कहीं क्रॉस ब्रीडिंग प्रोजेक्ट थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, थ्रू साइंटिफिक एनालिसिस, ये चीजें हो ही नहीं सकती, ठीक है। आप कहां क्या पढ़ रहे हो मेरे से, चीजें क्या चल रही थी, आप लोग कहीं चले गए। बट ये ठीक है, 2012 के अंदर इकोलॉजिकल पार्ट आता है, दैट्स वाई उसी इकोलॉजिकल पार्ट की वजह से एनवायरमेंट को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया बाय यूपीएससी। और आज इकोलॉजिज्म आप लोग कह सकते हैं। देन चलिए, कम टू द पॉइंट। नाइट्रोजन कंपाउंड इज द बेस, राइट डाउन, नाइट्रोजन कंपाउंड इज द बेस of DNA, the base of DNA, comma RNA and protein, comma RNA and protein. Nitrogen cycle write down, nitrogen cycle is the biogeochemical cycle, that describes the transformation of nitrogen and nitrogen containing compound in nature, and nitrogen containing compounds in nature. Atmospheric nitrogen, next point, atmospheric nitrogen is the biggest source of nitrogen in the food chain. Next point, in the food chain, plants move carbon from the food chain, plants move carbon from the atmosphere
into the biosphere through photosynthesis. नाइट्रोजन हम लोगों ने कार्बन के बारे में रिटर्न कर लिया। हाँ, नाइट्रोजन इज एन essential component of protein and nucleic acid in living organism and nucleic acid in living organism. Nucleic acid in living organism. The nitrogen cycle, next heading, can be studied in 5 steps. Can be studied in 5 steps. Number 1, nitrogen fixation. Number 1, nitrogen fixation. चलिए एक बार देखते हैं, फिर 1 by 1 रिटर्न करेंगे। देखिए, we know about the nitrogen present in atmosphere. Atmospheric nitrogen is the biggest source of nitrogen. तो यहां से नाइट्रोजन गैस, अब नाइट्रोजन गैस बाय द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कौन कर रहा है? एक बैक्टीरिया कर रहा है। वेरी गुड। और वो बैक्टीरिया कहां प्रेजेंट है? इन सॉइल। थ्रू रूट्स एक प्लांट के अंदर वो एंटर करता है और फॉर्म करता है सर अमोनिया। एंड अमोनिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। वेरी गुड। दिस नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ये दिस इज नाइट्राइट और कन्वर्ट है इनटू नाइट्रेट। ये नाइट्राइट कन्वर्ट है सर नाइट्रेट के अंदर। देखो बहुत सिंपल है एक प्रोसेस ये समझने के। मैं सब कुछ आपको रिटर्न कराऊंगा, ठीक है, बस थोड़ा सा उसको समझे। देखो यहां से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एक बैक्टीरिया के थ्रू, कौन सा बैक्टीरिया अभी नहीं जानना आप लोगों को, मैं आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को नोट कराऊंगा, बट अभी आपको नहीं जानना। लेकिन ये बैक्टीरिया यूज होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है सर। वो प्लांट के अंदर थ्रू रूट्स वो प्लांट के अंदर एंटर कर गया। अब प्लांट के अंदर एंटर कर गया इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, पर नाइट्राइट, नाइट्राइट को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं करेगा। नाइट्राइट को प्लांट डायरेक्ट यूज नहीं करेगा। वो किस फॉर्म में यूज करेगा? नाइट्रेट की फॉर्म में यूज करेगा। और उस नाइट्राइट को नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट भी एक बैक्टीरिया करता है। कौन सा बैक्टीरिया है नहीं जानना, बट दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रेट है, नाइट्रेट को डायरेक्ट प्लांट यूज कर लेगा, दैट इज असिमिलेशन। नाइट्रेट को यूज कर लिया उसने, यानी प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर रहा है,
पहले एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर, अमोनिया, अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, और इस नाइट्रेट को यूज करता है कौन, एक प्लांट, और प्लांट को खाता है कौन, काऊ या कोई ऐसा एनिमल, उसका डिकम्पोज होता है, और डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में फॉर्मेशन होती है किसकी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, या सॉरी अमोनियम आयन की, और अमोनियम आयन डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, यानी एक तो आपका ये प्रोसेस आ गया कंप्लीट, एक डायरेक्ट अमोनियम कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट, और नाइट्राइट कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट। अब ये जो नाइट्रेट है, ये जो नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, एक तो ये प्रोसेस हो गया। बट ड्यूरिंग लाइटनिंग, थंडरिंग, है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो डायरेक्ट भी होता है, एक तो ये इसके थ्रू हो गया जो प्रेजेंट है, और एक लाइटनिंग के अंदर भी, लाइटनिंग के अंदर भी, ड्यूरिंग लाइटनिंग, ठीक है सर, ड्यूरिंग लाइटनिंग ये भी डायरेक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट हुआ, और किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट के अंदर, और नाइट्रेट डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रोजन के अंदर, और इस नाइट्रेट को डायरेक्ट प्लांट भी यूज करते हैं। बिल्कुल आराम से देख लीजिए, अगर लगे सर यहां प्रॉब्लम है, ये डाउट है, तो आप मेरे से पूछें। लाइटनिंग हाउ डायरेक्टली, इन ड्यूरिंग लाइटनिंग, हाँ ओके, चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और रिटर्न करेंगे, ठीक है आंसर। सो फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, है ना। वी नो अबाउट कि जो नाइट्रोजन गैस है प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द रेन, दिस नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। अब वाटर कहां है, इन द क्लाउड, है ना। जैसे ही उसके साथ रिएक्शन होगी तो सर ये जो नाइट्रोजन है, दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या दिस नाइट्रोजन, वो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है और तो फॉर्म करेगा नाइट्रेट, और वही नाइट्रेट सॉइल के अंदर डायरेक्ट चला गया, और डायरेक्ट अगर सॉइल के अंदर चला गया, देखो यहां एक बार तो कन्वर्ट करने के लिए आपको डिफर काइंड ऑफ बैक्टीरिया का रिक्वायरमेंट हुआ, बट यहां से आपको किसी बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, डायरेक्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड, या वी कैन से दैट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, और नाइट्रेट को डायरेक्ट प्लांट ने यूज कर लिया। देन नाउ सो फर्स्ट पार्ट nitrogen fixation, write down, as we can see nitrogen can be fixed, nitrogen can be fixed in two ways। आप देख रहे हैं, फर्स्ट वन इज lightning and direct, second one is atmospheric, है ना, in two ways। first one is lightning during cloud formation, in two ways। first, lightning during cloud formation,
nitrogen and oxygen combine with each other, nitrogen and oxygen combine with each other to form oxides of nitrogen, combine with each other to form oxides of nitrogen in the atmosphere by lightning these nitrogen oxide then dissolve in rainwater and on reaching the earth surface becomes a part of soil and water. Then now second, we know about that some free microorganisms are found in soil. We know about. So write down a small part, free living microorganism. ये सेकेंड पार्ट नहीं है अभी, फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फर्स्ट हो गया आपका लाइटनिंग हो गया ना फर्स्ट, सेकंड कर लो इसको फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microbes like the blue-green algae, blue-green algae and bacteria fix the atmospheric nitrogen into nitrites this is nitrites and nitrates and nitrates. These nitrogenous compound are then released into the soil. ठीक है सर. ये फर्स्ट पार्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन के दो पॉइंट्स हो गए आपके सामने. एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको डायरेक्ट मिल रहा है, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू दिस प्रोसेस मिल रहा है. सेकंड पॉइंट, सेकंड ही हुआ, फर्स्ट तो नाइट्रोजन फिक्सेशन था. सेकंड पॉइंट दैट इज नाइट्रोजन एसिमिलेशन.
plants absorb nitrogen in the form of nitrates, to prepare amino acid, the nitrogen is then taken up by the animals, in the form of protein through the food chain, अब नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने और प्लांट्स को से फूड चेन के थ्रू इन्होंने एनिमल्स ने गेन किया. देन नेक्स्ट इज अमोनोफिकेशन. जैसे आप और हम अपनी बात करते हैं, ठीक है. चलिए, जो सेम कंडीशंस हमारी बॉडी में है वही सेम कंडीशंस एक एनिमल की बॉडी में. जैसे हमारी बॉडी में किडनी जो है वो ब्लड को प्योरीफाई कर रही है, एमिनो एसिड अमोनिया हमारी बॉडी से रिलीज होता है. सेम कंडीशन एक एनिमल की बॉडी से भी रिलीज होता है. ह्यूमन ऑल्सो टाइप एनिमल, वी नो अबाउट दैट. तो जिसकी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी बॉडी में अमोनिया रिलीज होगा. अमोनिया तो हमारे स्वेट के अंदर भी होता है, यूरिन के अंदर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है. तो अब देखिए, अब यहां से जैसे ये प्रोसेस चलता रहेगा सर. अब यहां पर जो डिकम्पोजर है वो क्या फॉर्म करेंगे, अमोनियम आयन फॉर्म करेंगे, that is known as ammonification. So we can say that this is the third procedure. First procedure is this is the first procedure. Second procedure is जो डायरेक्टली प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको थ्रू फूड चेन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, एक एनिमल एब्जॉर्ब कर रहा है. यस और नो? 2 ही पॉइंट हुए या 3 हो गए? 2 हुए ना. 2 पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा. थर्ड पॉइंट, दैट इज अमोनोफिकेशन. राइट डाउन, दैट इज अमोनोफिकेशन. The protein in the body of the animal, are broken down into simpler forms like urea and ammonia. These are then removed from the body along with urine and excretion, dead plant and animals also return nitrogen to the soil,
एज अमोनिया कंपाउंड या एज अमोनियम कंपाउंड, एज अमोनियम कंपाउंड. These ammonium compound are then converted to ammonia by ammonifying bacteria. Next process, that is nitrification. Nitrification. Number 4th, conversion of ammonia into nitrates. Conversion of ammonia into nitrates is called nitrification. Nitrifying bacteria like nitrosobacter, and nitrosomonas and founding in soil convert ammonia into nitrate. फर्स्टली आप लोग ब्रैकेट में डाल सकते हो अमोनिया, देन नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स. आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे. सम ऑफ दीज नाइट्रेट्स, ओके, some of these nitrates and nitrites, are again taken up by the plants for their न्यूट्रिएंट्स. देखो पीटी में क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सर, दोबारा आ सकता है. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ये आप दोनों का पता होना चाहिए. ये आपसे अब क्वेश्चन जो पूछ सकता है, कन्वर्ट फंक्शन ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स. अमोनिया कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स बाय दीज टू बैक्टीरिया, नाइट्रोसोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास. ठीक है, ये हमसे पूछ सकते हैं. दैट दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट. सो नेक्स्ट पार्ट,
या वी कैन से दैट द लास्ट पार्ट, डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन, ये तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है. अब डीनाइट्रिफिकेशन, उसके अंदर भी बैक्टीरिया है, सूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम. ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम. आप लोगों ने नाम सुना है टिटेनी या टेटनस सुना होगा, है ना. टेटनस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम भी तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी तो है, क्योंकि मिट्टी में मिलता है वो. आपको टेटनस का इंजेक्शन कब लगेगा? और कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया और रोड पर गिर गया, यानी मिट्टी के अंदर जो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है ये मिलता है. ठीक है, तो नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन लिखे सर. डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सूडोमोनास, UDOMON मोनास, सूडोमोनास, एंड क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम. हेलो संतोष गोयल. living in the soil, living in the soil reduce the soil nitrites, reduce the soil nitrites, and nitrogen is written back into the atmosphere, and nitrogen into the written back, nitrogen which is written back into the atmosphere. ये जो नाइट्रेट से इस नाइट्रेट से कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन, ये भी एक बैक्टीरिया, और यहां दो बैक्टीरिया हैं, सूडोमोनास एंड क्लोस्ट्रीडियम. ठीक है सर. दिस इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, दिस इज द नाइट्रीफाइंग प्रोसेस. और इस नाइट्रीफाइंग प्रोसेस में भी दो ही बैक्टीरिया यूज हो रहे हैं, नाइट्रोसोबैक्टर और नाइट्रोसोमोनास. ठीक है सर. यानी means we can say that a bacteria is the most important role in nitrogen. yes or no? ये दो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहे हैं और दो बैक्टीरिया वापस नाइट्रेट से नाइट्रोजन में. हाँ, मैंने अभी क्लोस्ट्रीडियम का इसलिए तो एग्जांपल दिया था कि रोड पर चलते टाइम गिर गए, है ना. और ये बेसिकली सॉइल के अंदर होता है, और जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो वेस्ट होता है उसके अंदर मिलता है, एनिमल के वेस्ट में मिलता है. डायरेक्ट कन्वर्ट कर देते. उसी के साथ तो मिलते हैं. नहीं, ये एक्टिव होते हैं ना वहां, उस कंडीशन में ये एक्टिव होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल. नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ये कर रहे हैं ना, ये तो डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं. हाँ,
नहीं, डीनाइट्रिफिकेशन किसका किया? इसका किया ना, नाइट्रेट का किया। जब इनको नाइट्रेट मिलेगा तभी तो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, उससे पहले थोड़ी रिएक्शन करेंगे ये। इनको तो ये इनका काम है नाइट्रेट्स को रिड्यूस करना। अब नाइट्रेट को रिड्यूस कैसे करेंगे? रिड्यूस मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें से ऑक्सीजन को हटाने का। अब यहां ऑक्सीजन हट गया तो इनका तो रोल ही नहीं है, फिर ये वर्किंग ही नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे अब। लेकिन अब जैसे नाइट्रोजन मिला, अब नाइट्रोजन मिला तो ये एक्टिव हो गए, ये एक्टिव हो गए तो ये रिएक्शन करने लगे। ये रिएक्शन ऐसे ही चल रही है। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन साइकिल। राइट डाउन, वेरी सिंपल साइकिल। Oxygen cycle. Write down the movement of oxygen through the atmosphere, the movement of oxygen through the atmosphere comma biosphere through the oxygen in biosphere bracket plants and animals, and the lithosphere, earth crust, bracket earth crust, is known as oxygen cycle. 21% of oxygen is found in the elemental form in the atmosphere. Next point, it also occur extensively in the combined form in the earth crust, as well as also in the air, in the form of carbon dioxide. In the form of carbon dioxide. Next point, it is found as the oxide of most metals like silicon, and also as carbonate, comma sulfate, comma nitrate, and other minerals in the earth crust. It is also an essential component of
most biological molecule like carbohydrate, protein, nucleic acid and fats. Nucleic acid and fats. We know about these type of components. We know about carbonates. We know about oxygen present on earth crust. In which form? Now, most important part, that is the process of oxygen cycle. Write down, process of oxygen cycle. Oxygen from process of oxygen cycle. Process from oxygen cycle. Process of oxygen cycle. Oxygen from the atmosphere is used by the processes like combustion, respiration and formation of oxide of nitrogen, all, next point, all aerobic organism use free oxygen to respire. However, animals exhale carbon dioxide back into the atmosphere. Animal exhale carbon dioxide back into the atmosphere. Photosynthesis, next point, photosynthesis is the main part in which plant release oxygen into the atmosphere as the byproduct of photosynthesis. Photosynthesis. Phytoplankton, next point, phytoplankton. What is phytoplankton? Floating plants or algae. On oceanic water, that is phytoplankton. Oceanic water, floating. Write down, phytoplankton produce maximum oxygen on the earth. Next point, oxygen get decomposed into fossil. Oxygen get decomposed into fossils
and fossil fuels सर देखिए, फोटोसिंथेसिस सेम प्रोसीजर इन कार्बन साइकिल और सेम प्रोसीजर इन ऑक्सीजन साइकिल, so we can say that they are interconnect with each other, yes or no? So next heading, interconnection between carbon cycle and oxygen cycle. Write down interconnection between carbon cycle and oxygen cycle. Plants use carbon dioxide for photosynthesis and release oxygen. Oxygen is used by animals and oxygen is used by animals for respiration and release carbon dioxide. Again that carbon dioxide is used for photosynthesis by plants and they release oxygen That is how interconnection between interconnection of cycles goes on. ठीक है सर, यानी ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और वाटर साइकिल, ये हमारा कंप्लीट हो गया. दीज आर द मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल फॉर अस. दीज आर द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. ओनली 2 साइकिल्स आर रिमेनिंग, ठीक है, जिनको हम we will discuss in next class. So thank you so much for connecting us. Thank you so much for listening carefully. और अगेन फिर से झेलने के लिए मेरे को, है ना. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. जय हिंद, जय भारत.